Mm.
Okay, let us start today's session. You are welcome to the digital communication class. Okay, this is also one of the major subject because you are from electronics and communication engineering. So digital communication is one of the important paper here. And just last semester, you have studied digital communication systems. So in the last semester, you have studied on the communication system. Over there, you have studied what is basic concept of communication system. Okay, what is the major component? Okay, what are the major component actually needed for designing of a basic communication system? That also you have studied. And what is the need for modulation? Why you need modulation techniques? What is the concept of modulation techniques? Okay, how many types of modulations are there? Okay, so and advantages and disadvantages one over another. Okay, so can anyone tell me from your side what is communication and what are the basic components of a communication system? Transmitter, receiver, input device. And transmitter, Channel. receiver. Okay, these are the basic components: transmitter, receiver, and you have transmitter, we have receiver, Channels. channel, Channel. channel. Okay, so in narrow sense, these are basic important material devices we are required. You are dealing with communication system. That means you have to communicate between at least two person. Okay, two stations, isn't it? So for that, you need one transmitter who sends the data to the receiver, and receiver receives that information which was sent by the transmitter in a communicated media. That is most important. That may be coaxial cable, that may be air. If it is in the case of fiber optic communication system, in that case it will be fiber. Okay, so it's a simple example. In a normal classroom teaching, there is a teacher that uh, teaches you. So that the teacher basically speaks some things, okay, as audio signal, speech signal. All the students, they're seated, they are there, they are listening all those lectures, voices of teachers. They're listening carefully. Okay, so students are there like a endpoint, that means receiver. Okay, teacher being used as a sender. So meaningful information teachers sharing, and students are receiving all those information. And the distance is very small, so a direct communication takes place. Okay, from the mouthpiece or from mouth to the your ear. Okay, so that means distance is very less. So direct communications are taking place one. But when the distance is large, okay, or gatherings are so large auditorium, okay, where more than 500 students can sit over there. So over there, for the betterment of the communication system, for fruitful communication system, over there we are going for using some sort of mics, that is microphones, and some sort of speakers. Okay, okay. So in that case, that microphone at the input side, at the sender side, that microphone can be used as input transducer. Okay, what is the role of that? Because the teacher speaks something that is audio acoustic signal, speech signal, and that is now converted into electrical one by means of your mic. Okay,
So the microphone converting your sound signal, acoustic signal to the electrical one. So that microphone now being used as a input transducer. Now as being converted electrical, so that can carry through the wire. On the end part, that the sender side, you can think of that speaker is there. Okay. So speaker is also one kind of transducer, and that is converting your electrical into sound again. Until and unless this is sound again, we can't hear it. So that speaker now can be treated as output transducer here. So these are the basic communication systems. Now when the distance is large, okay, beyond the campus, so now the modulation coming to the consideration. Okay, so you have studied a lot of things why you need modulation. Okay, lots of advantages are there, lots of causes are there for which we can adopt it modulation techniques. So modulation, one of the major role is that it just reduces the antenna size. Okay, not only reduces antenna size, but also it is used for multiplexing systems. Okay, so lots of things are there. So communication modulation, in communication modulation is a major role. That means in short, you can say that this is a mixing of low frequency sound message signal with the high frequency signal. It's a kind of that. The demodulation part, okay, far away from the sender. In that case, sender receiver receives the information which was sent by the transmitter, and the demodulation takes place here. And it is a kind of separation of the message or desired signal from the carrier part. Okay. Now at the transmitter, you are sending your message in different way or different kind of techniques you are adopting. So first one may be the amplitude modulation over there in the case of analog communication system. Here, as far as analog communication, here both the signals, message or as well as the carrier, both are in the form of analog here. They are continuous in time. Okay, either cos or sine. So what happens in the case of amplitude modulation techniques? The message, the amplitude of the carrier actually varied in accordance with the instantaneous value of the baseband signal, and you are dealing with A. In the same way, when we are concerned about frequency and phase, that is the angle part, then angle modulation coming to the consideration. When we picturize the angle modulation, it is of two types, that is frequency modulation and the angle phase modulation. Okay. So these are basically kind of analog. Here message and the carrier both are in the form of analog. Okay. So in analog case, you have studied the noise part. Okay. So here the noise introduction is very much easy. Okay. In the case of AM. Okay. Lots of classification of the AM are also there. I am not dealing with all those things because you have already studied AM का classification क्या है, frequency का classification क्या है, phase का क्या क्या होता है, phase and frequency में क्या relation है. If you still need to recapitulate, you can go through all those things by yourself. So the thing is that the basic difference between the analog communication and the digital communication system is that in the case of analog communication, we are taking both the signals as analog, but in the case of digital techniques, the message or the baseband signal to be converted into digital before taking any sort of modulation techniques. Okay. So here the first part is the coding technique. Okay. Source coding technique. Source means the message information that generates, that is called the source. Source means source of information, source of message. So source coding is technique is important here because your message is no longer being used as analog here. Okay, rather we are going to use as digital signal, digital data. So you need to code here. That means the analog signal we convert it into either 0 or 1 or combination of 0 and 1. Okay, the combination of 0 and 1. And in the signal systems part, over there, we have studied a little bit of that, isn't it? What is analog signal?
what is discrete signal, discrete time signal. Okay, then what is sampling, but still we are going to discuss here. Okay, because it is a digital communication technique, so we'll start again from the beginning, don't worry about that. So the basic thing is that in the case of digital communication technique, we are using here also both signal. Analog signal means the message signal and the carrier signal is the analog signal here. But the thing is that before going for any sort of modulation technique, your message signal, which was earlier analog, that should be converted into binary data, and that is the digital signal. After getting it, after getting your digital data means combination of 0 and 1, that means after source coding you are getting binary data. So after source coding, the line coding techniques is required. So line coding technique means once you are getting the binary data, that is the combination of 0 and 1 from the analog signal, now that binary data should be converted into digital signal from the voltage form. Until and unless the voltage form you have, you can't send the message sender to the receiver. So line coding technique comes into the consideration. So several techniques are there. We'll discuss in detail. Don't worry about that. Unipolar return to zero, unipolar non-return to zero, bipolar return to zero, Manchester coding, phase quaternary. So lots of things we have to study about there. Lots of line coding techniques are there. We'll discuss about their advantage, disadvantages. Okay, and also we'll calculate numerically or mathematically their advantage, disadvantages. Okay, so we'll analyze it. All those line coding techniques will analyze by using some mathematical tools. Okay, PhD techniques of R spectral density. Okay, all those things will calculate. So don't worry about that. After that, after line coding techniques, that means पहले क्या होगा? Source coding होगा. That is sampling, quantization and coding. Source coding का part क्या है? I will go for discussing. So पहले क्या होगा? Source coding. Number one, source coding. Okay. Then second part क्या बोला मैंने? Source coding के बाद line coding. You please write down also. You can write down also if you need, if you think that. And third part is your modulation techniques. Okay, modulation techniques, digital modulation techniques. Like you are in the case of analog part, you have taken the use of amplitude modulation, frequency modulation, phase modulations, basically these three. Simply here also we're going for same techniques for amplitude, for frequency, for phase, but the name थोड़ा सा अलग तरीके से होगा. Okay, so the first thing is that amplitude shifting, that is a kind of amplitude modulation, and frequency shifting kind of frequency modulation, phase shifting kind of phase modulation. उसके बाद we are having few more modulation techniques, DPSK, differential phase shifting, UPSK, quadrature phase shifting, MSK. All these things, modulation techniques are there. We'll study in detail in our next few classes. Okay. So उसके बाद we'll discuss about some sort of filter. Okay. Then ISI and I patterns, intersymbol interference when you are sending data. So between two consecutive data, they may interfere with each other. Then some sort of error will occur, and when the data are transmitting from source to the receiver, so channel is there. So in the channel part, so dispersion of the pulses sometimes taking place. So dispersion means the pulses are wider, gets wider. Okay. So when the pulses are gets wider, so what will happen between two consecutive pulses, they get mixed up. Little bit interference may occur. So that part is called basically ISI, inter-symbol interference. That also be discussed further in detail in our few next classes. Okay. So inter-symbol interference, and mathematically or quantify this sort of ISI, quantify or quantify this ISI, we'll use some sort of other technique that is called I pattern. So as you hear the name I pattern, so that means it is a kind of eye structure of the human. Okay,
and from there we have some sort of information and we'll discuss it. And the question may come is most of the cases, what is I pattern, significance of I pattern, what are the information we are getting from the I pattern. Everything will be discussed in the later classes. Okay. So thing is that if you are not attentive in the very beginnings, you will get face a lot of problem, because lots of subjects in the semester you have, those are most important. Okay. So you have to concentrate each and every paper precisely from the beginning of the classes. Okay, and if your today attendance is 20%, and weekly I will collect and your attendance, if you go down below 75%, so I can take some actions, because from the beginning I'm telling you, you have to at least I will I need 100% attendance, but sometimes it may happen some physical प्रॉब्लम हो सकता है, घर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, sometimes it may happen, but 75 is the minimum criteria here. But when you are going for mid sem, you will face a lot of problem. Okay, so you be serious. Okay, be serious, you people. And tell your friend also, it's mandatory, everyone you have to present everyday class. Okay, and listen carefully from the beginning. If you have any doubt, I can repeat more than one, no problem about that, because last class when I've taken signals, you have seen that. I will never mind if you ask the questions, I will be happy, and if you don't understand, you please tell me, sir, please repeat 1 second, so I can repeat it more than one time. So no problem at all. And as digital communication system concerned, it is very much important for your this semester and the gate dimension also. So the I have classified few modules, though you are having the syllabus, but I will go for in that way. ना पहला क्या होगा ना सोर्स कोडिंग होगा, उसके बाद क्या होगा ना लाइन कोडिंग होगा, उसके बाद क्या होगा ना डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक्स विल स्टार्ट. In that way we'll start. After that जो जो चीज रिमेनिंग होगा वो हम वन बाय वन वो हम खत्म करेंगे. तो why we need digital communication system? Digital communication system में बहुत सारा advantages है ना, बहुत सारा advantages है. I think you have studied. I can give you one example. What is the main advantage? One of them I can say, you will understand, because it is quite widely related with your digital electronics system circuits. I think you have studied parity bit car in general. Okay, that means you are having, मान लो तुम्हारे पास 4 बीट है, 1010. Okay, so that means 1010 है ना. So if you send it by even parity, what I am telling you that, मान लो the data is something like that 1010. Okay, मान लो तुम्हारे पास ये डेटा है, you are sending this data. तो ये 4 बीट तुम्हारा मैसेज है, ठीक है, 4 बीट तुम्हारा मैसेज है. तो इवन पेरिटी तुम सेंड करोगे तो पेरिटी बीट क्या होगा, मान लो इस तरह पेरिटी बीट हम लिखना चाहते हैं, तो इवन पेरिटी मींस इवन नंबर ऑफ वंस यू हैव टू कीप. सो पेरिटी बीट क्या होगा, पेरिटी बीट 0 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेटा इवन नंबर में है, इवन पेरिटी में है. ओके, तो इफ इट इज, मान लो इफ इट इज 0 होता तो डेटा इटसेल्फ ऑड पेरिटी में है, तो इवन पेरिटी में तुमको करने के लिए क्या करना होगा, पेरिटी बीट को हाई करना. ठीक है, तो ये था तुम्हारा पेरिटी का कॉन्सेप्ट, इवन पेरिटी का कॉन्सेप्ट. आई एम डीलिंग विद इवन पेरिटी. ओके, so according to that, parity bit would be either 1 or 0. Okay, considering how many numbers are present, how many ones are present in the message bit. If message bit itself containing even number of ones, so parity bits would be 0. If the data itself containing odd number of ones, so parity bits would be high. So this is the concept. So now 100, मान लो 1000 you have sent it. Now sender to receiver, when the data comes, now somehow at the receiver, okay, मान लो receiver में क्या हो गया,
रिसीवर में आके ये तुम्हारा समहाउ ये 1 हो गया है ना, लास्ट बिट चेंज होके 1 हो गया। नाउ देखो ये टोटल क्या हो गया, ऑड पेरिटी में आ गया। ये तो ठीक है, ये 1 दो 1 हो गया, लेकिन पेरिटी बिट 1 है। तो ये सेंडर से तुम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो रिसीवर को, जे हम लोग एवरी टाइम वी आर सेंडिंग विद इवन पेरिटी। तो रिसीवर में आके ये चेक करेगा और देखेगा ये ऑड पेरिटी हो गया, ठीक है, ऑड नंबर 1 हो गया। तो दैट मीन्स your receiver will detect an error easily by simply parity. Just I'm just giving simple example. And practically it's not so easy, but simply parity checker or detector is not that up to the mark. But for better understanding, for the simplicity, sort of sake of simplicity, देखो यहाँ पे डिजिटल डेटा होगा तो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जे डेटा में एरर कुछ हुआ कि नहीं। सिंपल पेरिटी चेकर इन जनरेटर, दैट मींस सिंपली एक्स नॉर गेट एक्स और गेट यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 इनपुट का एक्सक्लूसिव नॉर गेट हम लोग यूज करेंगे, तो उसी से हम लोग का काम चला जाएगा ये डेटा ठीक है कि नहीं। तो इतने सिंपल सा है। सो यूजिंग हेलो डिजिटल, सर। हाँ बोलो। सर ये सेकंड वाला एक बार फिर से बताइएगा। हाँ जरूर बताएंगे। तो सोचो जे तुम इवन पेरिटी में डेटा भेज रहे हो, वी आर सेंडिंग विथ इवन पेरिटी। तो हम लोग का ओरिजिनल डेटा क्या है ना, 1000 है, मीन्स 8, ठीक है। तो इसलिए पेरिटी बिट 1 होगा, ठीक है। मैसेज बिट itself एंड पेरिटी भी कुल मिलाकर तुम्हारा इवन नंबर ऑफ 1 होना चाहिए। तो ये डेटा वी आर सेंडिंग फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। रिसीवर में हम लोग देखे हैं, हम लोग भेजे थे तो ये, लेकिन रिसीव कर रहे हैं हम लोग 1001 हो गया, मीन्स 9 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, पेरिटी बिट तो 1 ही होगा पहले से, तो देखो 3 हो गया, मीन्स क्या हो गया, ये इवन पेरिटी में नहीं है, ये ऑड पेरिटी में बदल गया। तो रिसीवर वो क्या चेक करेगा, दैट विल चेक फॉर इवन पेरिटी बट दैट इज गेटिंग ऑड पेरिटी। तो क्या करेगा वो आउटपुट में एरर थ्रो करेगा, जे एरोनियस डेटा हम लोग रिसीव कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑड पेरिटी दिखा रहा है। लेकिन सेंडर ने बोला गया था कि हम लोग एवरी टाइम सेंडिंग द डेटा एज इवन पेरिटी, एज वी आर गेटिंग इट एज ऑड पेरिटी। नाउ ये ऑड पेरिटी हो गया, तो ऑड पेरिटी हो जाने से क्या होगा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ डेटा में गड़बड़ हो गया। तो ये ऑड पेरिटी रिसीवर में आकर ये हम लोग चेक करें, एंड चेक करने के बाद मिला ऑड पेरिटी, लेकिन ये इवन पेरिटी था, तो एरर हो गया। तो इजीली यूजिंग एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्स नॉर गेट यूज करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो यूजिंग सिंपल पेरिटी चेकर एंड जनरेटर एंड चेकर, वी कैन इजीली डिटेक्ट द एरर इन द डिजिटल डेटा। बट लेकिन ये सिंपल सा सर्किट नहीं होगा इन द केस ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्निक। सो दिस इज आल्सो वन, आई एम गिविंग यू वन सिंपल एग्जांपल that digital communication technique is so much easier. So error detection is so important. Also we can correct it also. We can find out the position of the error, bit position where the error actually occurred. So that you have to find out first the position, कौन position में तुम्हारा error हुआ, MSB में ना LSB में ना in between. So that position you have to find out. So lots of processes are there error detection का. So after finding the position you can change that value. Okay, मान लो यहाँ पे कहाँ पे एरर हुआ, LSB में हुआ, तो LSB में एरर होगा, LSB में क्या है 1 है, तो LSB के हम लोग क्या करेंगे 0 कर देंगे। So easily we can find out the error, and also that means detection and the correction is very simple here. Okay. Also, one more important thing is that here we can easily store the data. Okay, we can easily store the data, digital data. So this is also one most important thing. Also, you can encode the data. That means for security reason. Okay, for security reason,
you can encrypt the digital data. You can encrypt the digital data. Okay. So by encrypting, you can send the data. Okay. So encryption के लिए तुम्हारा और एक सब्जेक्ट आ जाए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. हाँ, कोई ना कोई टाइम हुआ है, तुम डिजिटल डेटा को तुम मैसेज फॉर्म में भेज सकते हो. So using digital data, you can have lots of processes. And nowadays, all the systems, the techniques are in the form of digital internet connectivity, everything, everywhere. So lots of possibilities are there in digital communication techniques. Okay. So that's why I've written so many advantages here. You just go through. Okay. And digital communication systems are cheaper to implement. Okay. So you can implement very easily. Just I just given one example for error detection and the correction. Simply exclusive OR gain and NOR gate can be used as error detection and the correction. So it's simple as a circuit. Okay. So so digital communication allows regeneration the digital signal in the long distance transmission, which reduce the noise event. यहाँ पे हम लोग a repeater we can use. यहाँ पे repeater. Certain time interval, a digital data can be detected whether there is any error or not, and also we can retransmit it. So that processes can be easily adopted here. Okay. So जैसे मैंने बोला यहाँ पे डिजिटल डेटा है, तो मैंने तुमको बोला the source coding we can use here, source coding technique. So analog signal can be converted into digital data. So that is source coding is done here. So that means you can digital data को तुम compress कर सकते हो, ठीक है. तो everything and data को तुम store भी कर सकते हो very easily. So all these things are happening here. Okay. प्राइवेसी मैंने तुमको बोला, एन्क्रिप्शन, डेटा एन्क्रिप्शन वो भी मैंने तुमको बोल दिया जे हम लोग इसको डेटा को प्रिजर्व कर सकते हो बाय यूजिंग डेटा एन्क्रिप्शन. सो नो वन कैन अंडरस्टैंड. ओके. सो ऑल दिस थिंग्स may happen here. Okay. Lots of things are there. So we'll study, but you have some disadvantage also. Okay. Synchronize is required. See, synchronize means मान लो तुम यू आर सेंडिंग द डेटा. पहले क्या है, मान लो डेटा है 1010, तो 1 पहले 1 गया, फिर 0 गया, फिर 1 गया, फिर 0 गया. सो 2 1 गया, 2 0 गया. तो सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो क्या होगा, रिसीवर में ये भी हो सकता है 0 0 1 1 हो भी हो सकता है, सो मेनी कॉम्बिनेशन आ सकता है. सो इसलिए डेटा सिंक्रोनाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. Synchronize timing synchronization is important here. So that is most critical one. So that is most important. And high power consumption, यहाँ पे power consumption थोड़ा बहुत होगा. Why? We'll study in the next class. You will observe that यहाँ पे बहुत सारा वो जो conversion होता है ना, एनालॉग टू डिजिटल, फिर डिजिटल टू एनालॉग रिसीवर में, ठीक है. ओरिजिनल डेटा क्या है, एनालॉग है, तो डिजिटल में कन्वर्टेड हुआ. तो डिजिटल डेटा के बाद डिजिटल सिग्नल हो गया और ट्रांसमिशन मिशन हो गया, रिसीवर में आ गया, उसके बाद वो डिटेक्शन होगा, फिर वो डिजिटल डेटा फिर से वो एनालॉग होगा. एनालॉग था, एनालॉग ही होगा. तो देखो ये जो इतने सारे प्रोसेसेस है, इतने सारे प्रोसेसेस होगा तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सर्किट भी रिक्वायर्ड होगा, और जो जितना सारे सर्किट बढ़ेगा रिक्वायरमेंट होगा उतना ही तुमको पावर सप्लाई देना. इसलिए power consumption in digital technique is higher than the analog system because यहाँ पे various sorts of stages of conversion taking place. Okay. And more bandwidth is required than the analog systems. And one more thing is that complex circuit. You know, circuit complex. क्यों? Why it is complex circuit? Simple सा है, लेकिन बहुत complexity रहेगा कुछ जगह में, क्योंकि बहुत सारा conversions है. So धीरे धीरे हम लोग देखेंगे ये हाई पावर कंजम्पशन क्यों लगेगा. व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डेटा सिंक्रोनाइजेशन, व्हाई द सर्किट इज कॉम्प्लेक्स. एज आई मेंशन दीज आर द डिसएडवांटेजेस. ओके. सो अच्छे से पढ़ाई करो. व्हाई यू नीड डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक्स, व्हाट आर द बेसिक कांसेप्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक्स, व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू स्टार्ट द डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक्स, what are the advantages of digital communication techniques, and what are the major disadvantages of the digital communication techniques. So we'll start from source coding technique. Okay. So we'll start from source coding techniques.
little bit you have studied in serial system part, but again we'll start uh, from the beginning. Okay. So the source coding technique. Source coding technique. गूगल क्लासरूम हम बनाएंगे कुआ का भी, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन का दे दिया, एवरीबॉडी शुड ज्वाइन ओवर देयर। अच्छा, टुडे सम टाइम आई विल सेंड ये रिकॉर्डेड क्लास का लिंक दे दीजिएगा सर ग्रुप में। और डिजिटल कम्युनिकेशन का दिए थे, मिल गया क्या आपको? Yes, sir, but computer architecture. हाँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बाबू नहीं दिया, आज हम दे देंगे। Sir, and also upload the respective syllabus of subjects, सिलेबस दे please. देंगे, हाँ सिलेबस भी हम दे देंगे, चढ़ा देंगे वहाँ पे, मेरे पास है। आज शाम तक हम कर देंगे, नाइट तक, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो पहले हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे ना, सोर्स कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सोर्स कोडिंग में पहला वाला क्या होगा, आएगा। ओके, बी में क्या होगा, क्वांटाइजेशन टेक्निक। थर्ड में कोडिंग पार्ट आएगा। ये थ्री मेजर सर अभी ऑनलाइन क्लास चलेगा सर? सुनो, इस बारे में तो अभी तक मैं डिटेल तो कुछ नहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन है। प्रिंसिपल मैम एब्सेंट में है, तो थोड़ा बहुत इस सप्ताह में शायद मैम आज आ जाएगी, तो बका आ जाएगी, तो उसके बाद लोग डिस्कस करेंगे। फाइनल जो कंक्लूजन है, डिसीजन है, तुमको देना पड़ेगा। तो थोड़ी दिन के लिए तुम लोग वेट करो, बस 2-3 दिन में शायद कुछ इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैंने देखा था जीयूटी शायद वो ब्लेंडेड मोड में शायद बोला गया, ठीक है ना। ब्लेंडेड मतलब है मिक्सचर होके, तो पता नहीं क्या डिसीजन होने वाला है। हम लोग भी कोशिश करते हैं ऑफलाइन के लिए, देखते हैं क्या होता है ना। तो लेकिन वो डिसीजन के बाद हम क्लास शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो लेट हो जाएगा, इसलिए क्लास चलते रहना, ठीक है। और तुम्हारा कॉलेज है, इधर तो आना ही पड़ेगा, आना भी जरूर है। और ऑफलाइन में भी हम लोगों को भी उम्मीद यही है, ऑफलाइन शुरू होने से अच्छा होगा, क्योंकि लैब भी है ना। तो ऑनलाइन में थ्योरी थोड़ा बहुत हो जाते हैं, लेकिन लैब तो बहुत, हाँ लैब बहुत मीन्स लैब का बहुत प्रॉब्लम है। फिजिकल नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो देखते हैं क्या डिसीजन होता है। मेरे अकेले में तो हम डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तो एचओडी लोग रहेगा। सर बट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस तो खुल गए ना सर, एग्जाम भी आपका ऑफलाइन ही होगा क्योंकि जेयूटी तो ऑर्डर दे ही दिया है। हाँ, तो वो ऑफलाइन क्लास में होगा, दे दिया। सुनो ना, यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डर होगा ना, वो सभी कॉलेज को मानना सुनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो नोटिस देखा था वो ब्लेंडेड मैंने परफेक्टली उन लोग नहीं बोला जो ऑफलाइन ही तुम लोग शुरू करो। आई थिंक ब्लेंडेड मोड में बोला गया था, तो इसलिए डिसीजन लेना होगा कि कैसे हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना ही होना चाहिए, इतना नहीं है हम लोग 1 मंथ के बाद हम डिसीजन देंगे, क्या होगा, इतना लेट तो नहीं चलेगा ना। तो जितना हो सके जल्दी में हम लोग हैं, कुछ डिसीजन तुम लोग को देना सर पड़ेगा। वो प्रॉब्लम नहीं है सर, मेन प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम हाँ आपका ऑफलाइन होगा ना, ऑनलाइन हाँ, सही से हो नहीं पा रहा है, ठीक ठीक ठीक, तो फिर ऑनलाइन प्रॉब्लम में। हम लोग को होगा ना हाँ, सर। तो जैसे मान लो दो लास्ट टू सेमेस्टर में ऑनलाइन माने वो कॉलेज में हम लोग जो इंटरनल भेजे थे उसी से हो गया, तो बात नहीं था। सर यूनिवर्सिटी तो सारा आपका हैंडओवर दे दिया है कॉलेज को जो भी करना है, हाँ बट एग्जाम तो वो लेगा ना। हाँ, एग्जाम होगा तो ऑफलाइन में एग्जाम होगा। बोल रहा है क्या? शायद ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि सर जिस ऑफलाइन ही होगा। तरह, हाँ क्योंकि जिस सर तरह, ऑफलाइन ही होगा सर, हाँ जिस तरह वो लोग और आगे बढ़ डेट रहे शीट हैं। भी दे दिया है सर कि जनवरी में एग्जाम होगा। जनवरी में ना, तो ठीक है, उसी हिसाब से काम होगा, टेंशन तो मत लो। हाँ, जो अच्छा होगा हम लोग वही करेंगे। और ऑफलाइन क्लास होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम लोगों के पास तो टीचर है, क्लासरूम है, ठीक है, हॉस्टल भी है, सब कुछ है। लेकिन कैसे शुरू होगा
ये कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, है स्टेप